بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, today we are going to discuss the last topic of this unit, comprehension. We have previously discussed the two question of comprehension. So let's come to the question number third. How does the bird react to the hardships in the poem? Hope is the thing with feathers. How does the bird react? किस तरह जो उम्मीद की जो परिंदा है वो रद्द अमल करता है to the hardships mean उन तकालीफ का, उन सख्तियों का in this poem, इस नज़म में. Hope is the thing with feathers. उम्मीद ऐसी चीज़ है जिसके पर होते हैं. इस पोम में जो बर्ड की मेंशन की गई है, जो हार्डशिप उस पर आती है, वो किस तरह रिएक्ट करती है. The bird reacts bravely. वो बहुत बहादुरी के साथ क्या कर देती है, रद्द अमल करती है. Towards the severe weather condition. उन मौसम की सख्त हालत में, मौसम के सख्त हालात में वो बहुत बहादुरी से सामना करती है. It faces, ये सामना करती है, the challenges, उन मुश्किलात का with great courage, बहुत हौसले के साथ, बहुत हिम्मत के साथ. and never loses, और हिम्मत कभी नहीं हारती. the ray of hope, यानी उम्मीद की उसको किरण नजर आती है, वो कभी नहीं हारती. Discuss how hope and the thing with feathers are similar. What does the poem reveal about hope? ये डिस्कस कर ले कि किस तरह उम्मीद और वो चीज़ इसके पर होती है, दोनों एक चीज़ें होती है. What does the poem reveal about hope? और इस पोइम में जो उम्मीद के बारे में कहा गया है, ये हमें क्या दिखाता है, रिवील कर देता है. So hope and the thing with feathers are similar. ये दोनों एक ही चीज़ें हैं. because hope is like a bird, क्योंकि उम्मीद जो है एक परिंदे की मानंद है. hope lives in the hearts of people. उम्मीद जो है लोगों के दिलों में रहता है. to encourage them, उनकी हौसला अफजाई करता है. in difficulties, सख्त हालात में, of life, जिंदगी के. just like a bird, इस तरह एक परिंदे की तरह, which faces storms, जो तूफानों का सामना करता है, जो तूफान का सामना करता है. and harsh weather condition, और सख्त मौसमी हालात का. So let's come to the question number 5. What do you understand by and the shore must be the storm? आप इसका क्या मतलब है कि and shore must be the storm? And shore must be the storm refers, और चाहे तूफान जितनी भी मुश्किल हो, refers, ये रेफर्स करती है टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म, उस तूफान की इंटेंसिटी को. इंटेंसिटी मीन उसके जो प्रेशर है उसके बारे में कि ये बहुत मुश्किल है. इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट होप सर्वाइव्स, कि बका करती है. होप जो है वो रहती है, जिंदा रहती है, इवन द सिवियर सिचुएशन ऑफ लाइफ, जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात में. डू यू लाइक दिस पोएम? आप इस पोम को पसंद करते हैं? वाई, क्यों? आई लाइक दिस पोम, मैं इस नज़म को पसंद करता हूँ. बिकॉज वट एवर इट इज सेड, जो भी कहा गया है अबाउट द बर्ड, इस परिंदे के बारे में, अप्लाइज टू होप, ये उम्मीद पे जो है अप्लाइज की जाती है. होप इनकरेजेस, होप जो है उम्मीद जो है हौसला अफजाई करता है. इन द सेम में, इसी तरीके से, एज बर्ड फेसेस, जिस तरह परिंदा जो है सामना करती है द हार्श वेदर कंडीशन, सख्त मौसमी हालात का, विद ब्रेवरी, बहादुरी के साथ. एंड सस्टेन्स अस, और हमें कायम रखती है, टू लिव ड्यूरिंग ग्रेट चैलेंजेस, कि हम मुश्किलात में जिए बहादुरी के साथ. ठीक है. So read the first stanza of the poem and write the following. Which abstract noun is described as having the living characteristic? एक क्वेश्चन ये है कि कौन सी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ बताई गई है जो जिसकी जो हुसियात है वो नॉन लिविंग थिंग्स की है.
what living characteristic does this item have, اور کون سی living characteristics ہے اس item کی. It has the following characteristic. ایک first جو ہے, the abstract noun hope is described as having the living characteristic like a bird. first جو ہے وہ اس میں hope کو, امید کو ایک پرندی کی مانند کی گئی ہے جو living things کے ساتھ comparison کی ہے. سیکنڈ جو کویسچن کیا گیا ہے ہم سے, what living characteristic does this item ہے, اور اس میں جو living characteristic ہے زندہ اجسام کے, جاندار اجسام کے خصوصیات دی گئی ہیں تو وہ کون سے ہیں. This item have the living characteristic of a bird. اس میں جو ایک پرندے کی جاندار کی خصوصیات دی گئی ہے. Having feathers, جس کے پر ہوتے ہیں. Living in the hearts, جو لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے. And facing hard situation with courage, اور سخت حالات, سخت مشکلات کا سامنا حوصلہ سے کرتی ہے, بہادری سے کرتی ہے. So let's come to the last topic of this unit, that is the writing. Write the summary of the poem Hope is the thing with feather. اس کی summary لکھنا ہے. Hope is like a bird. Hope جو ہے ایک پرندی کی طرح ہے. That lives in the hearts of men, جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. It sing a very melodious song. یہ بہت سریلی گیت گاتی ہے. But having no word, جس کے کوئی بھی لفظ نہیں ہوتے, جن کے الفاظ نہیں ہوتے. It never stops singing, اور یہ کبھی بھی گانا نہیں بند کرتا, گیت گانا بند نہیں کرتا. Hope can be heard. Hope can be heard in the severest storm. The song of hope can be heard in the severe storm. جو ہوپ کی جو یہ سنگنگ ہے, یہ موسم کے جو سخت حالت ہے, سیویئر طوفان ہوتا ہے, اس میں بھی سنائی دیتا ہے. Sometime بعض اوقات the storm becomes very destructive. بعض اوقات یہ طوفان بہت تباہ کن بن جاتی ہے. But the little bird of hope never loses the ray of hope. اور یہ جو امید کا جو پرندہ ہے وہ امید کی کرن کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتی, اپنی ہوپ کو نہیں چھوڑتی. And gives courage, اور حوصلہ دیتا ہے to other, دوسری کو. It can be heard, اس کو سنا جا سکتا ہے. In the coldest lane, سرترین سرزمین پہ. And also on the strangest sea, اور عجیب و غریب سمندر میں بھی. But even in the severe condition, لیکن مشکل ترین حالت میں, سخت ترین حالت میں. It never asked a crumb of me, اس نے کبھی بھی ہم سے یا ایک ریوارڈ کے بارے میں نہیں پوچھا. It never asked a crumb of me, اس نے کبھی بھی مجھ سے کسی ریوارڈ کے بارے میں اس نے کبھی ریوارڈ ہم سے نہیں مانگا. So this was the end of the lecture of the unit 8.